Hello friends, welcome all of you on my YouTube channel here, Anand's Nursing File. Today in this video, we are going to learn about nursing care plan that is osteoarthritis, and through this video you learn this care plan very easily, and this video helps you to write the nursing care plan in examination work purpose or for the assignment work purpose. तो फ्रेंड्स आज हम वीडियो में ऑस्टियोआर्थराइटिस का नर्सिंग केयर प्लान देखेंगे। तो फ्रेंड्स वीडियो को ध्यान से देखिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आइए देखते हैं नर्सिंग केयर प्लान ऑन ऑस्टियो आर्थराइटिस। तो यहाँ पर नर्सिंग केयर प्लान में हम डिफरेंट नर्सिंग प्रोसेस स्टेप्स यूज़ करेंगे, जिसमें नर्सिंग असेसमेंट, नर्सिंग डायग्नोसिस, गोल, प्लानिंग और इंटरवेंशन, रेशनल, इम्प्लीमेंटेशन एंड इवोल्यूशन, ये सारे यहाँ पर नर्सिंग केयर प्लान के स्टेप्स होंगे। तो फ्रेंड्स नर्सिंग केयर प्लान से पहले एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन देखते हैं, व्हाट इज ऑस्टियोआर्थराइटिस। देन हम नर्सिंग केयर प्लान को यहाँ पर देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस क्या होता है। यहाँ पर ऑस्टियोआर्थराइटिस इज द मोस्ट कॉमन फॉर्म आर्थराइटिस। ऑस्टियोआर्थराइटिस इज the most common chronic joint condition. It is also called wear and tear arthritis, degenerative arthritis, and degenerative joint disease. It occurs most frequently in hands, hip, and knees. A joint is where two bones come together. Cartilage is the protective tissue that covers the end of the bones. With osteoarthritis, this cartilage breaks down, causing the bone within the joint to rub together. This can cause pain, stiffness, and other symptoms. Next देखते हैं defining characteristics here. Osteoarthritis symptoms often develop slowly and worsen over time. Signs and symptoms of osteoarthritis include pain, joint stiffness, tenderness, loss of flexibility, grating sensation, bone spurs, swellings. These are the defining characteristics or sign and symptoms. नेक्स्ट देखते हैं नर्सिंग केयर प्लान ऑन ऑस्टियोआर्थराइटिस। तो यहाँ पर हम वीडियो में टोटल 5 नर्सिंग केयर प्लान देखेंगे, जिसमें से सबसे पहले देखते हैं नर्सिंग केयर प्लान नंबर फर्स्ट, रिस्क फॉर इंजरी। रिस्क फॉर इंजरी फर्स्ट नर्सिंग केयर प्लान होगा, जिसमें देखते हैं नर्सिंग असेसमेंट with subjective data not applicable because this is the risk diagnosis, and objective data same here not applicable. नर्सिंग डायग्नोसिस होगा यहाँ पर रिस्क फॉर इंजरी रिलेटेड टू अल्टर्ड मोबिलिटी सेकेंडरी टू ऑस्टियोआर्थराइटिस को होगा द पेशेंट विल बी फ्री फ्रॉम इंजरी। प्लानिंग और इंटरवेंशन देखते हैं। देन नेक्स्ट रेशनल होगा, मीन्स व्हाट इज द स्पेसिफिक रीजन बिहाइंड दिस इंटरवेंशन, मीन्स जो इंटरवेंशन हम पेशेंट को दे रहे हैं उसके पीछे क्या रीजन है। एंड इम्प्लीमेंटेशन इज द एक्टिंग फेज ऑफ द नर्सिंग केयर प्लान, मीन्स जो हमने इंटरवेंशन और प्लानिंग तैयार किया उसको अप्लाई करना है। तो देखते हैं फर्स्ट, कीप द रूम ऑफ द पेशेंट वेल लिट स्पेशली एट नाइट। रेशनल होगा प्रॉपर लाइटिंग डिक्रीजेज द रिस्क ऑफ इंजरी लाइक फॉल अमंग एल्डरली पेशेंट। इम्प्लीमेंटेशन होगा पर एडिक्वेट लाइटिंग अवेलेबल इन द पेशेंट्स रूम। नंबर सेकंड, position the personal item of the patient within easy reach such as call light, water, urinal and telephone. Rational होगा positioning the personal items near the patient will prevent the patient from going out of the bed alone. Implementation होगा पर position the personal items of the patient within easy reach. Number थर्ड देखते हैं, place the patient in a reachable room that is closer to the nurse. Rational होगा this will help in providing continuous monitoring and will help the nurse to respond quickly to the need of the patient. Implementation होगा patient place the patient in a reachable room that is closer to the nurse. Number 4, educate the patient about the safety measures such as raising the chair and toilet seat, use of handrails, correct use of mobility equipment and wheelchair safety. रेशनल होगा यहाँ पर सेफ्टी मेजर्स शुड ऑलवेज बी फॉलोड टू हेल्प प्रिवेंट एक्सीडेंटल इंजरीज एंड प्रिवेंट द पेशेंट फ्रॉम फॉलिंग। इम्प्लीमेंटेशन होगा पर एजुकेशन गिवन अबाउट सेफ्टी। नंबर 5 देखते हैं, इंस्ट्रक्ट द पेशेंट ऑन द प्रॉपर वे टू यूज अडेप्टिव मोबिलिटी इक्विपमेंट सच एज वॉकर, केन एंड क्रचेज एज नीडेड। रेशनल होगा अडेप्टिव मोबिलिटी इक्विपमेंट सच एज वॉकर, केन
and crutches will help the joint to easily move. Implementation के ऊपर instructed about the proper use of mobility equipment. Number 6 देखते हैं use of buffer bed and position the bed at a low position when sleeping. रेस्ट लोगों पर buffer bed and proper positioning may reduce possible injury from falling during sleep. Implementation के ऊपर patient placed in low position and buffer bed use. Number 7 देखते हैं teach the patient about the active and passive range of motion exercises. रेस्ट होगा range of motion exercises help to maintain and enhance muscle strength and joint function and increase the patient's endurance. Implementation के ऊपर taught about the active and passive exercises. Number 8 देखते हैं educate the patient on way to reduce weight. रेस्ट होगा to decrease stress on the weight bearing joints of the patient. Implementation के ऊपर education given about weight reduction. After writing these interventions, we write the evaluation steps. देखते हैं केयर प्लान नंबर फर्स्ट का evaluation होगा. नाउ पेशेंट फ्री फ्रॉम इंजरीज. तो हमारा जो गोल था द पेशेंट विल बी फ्री फ्रॉम इंजरीज वो हमने अचीव किया है बाई डिफरेंट इंटरवेंशन. तो इस तरह से केयर प्लान नंबर फर्स्ट को पर कंप्लीट करते हैं. नेक्स्ट देखते हैं केयर प्लान नंबर सेकंड. नर्सिंग केयर प्लान नंबर सेकंड होगा पर क्रॉनिक पेन. तो जो सबसे पहले देखते हैं नर्सिंग असेसमेंट. Subjective data patient says that I am having pain was with activity objective data होगा hesitancy to move joints guarding sign on the affected area facial grimace crying and restlessness. Nursing diagnosis होगा पर chronic pain related to joint stiffness goal होगा to relieve pain. Intervention देते first assess the pain scale on the patient. Assess the pain scale of the patient. The pain scale is a measurable element that the nurse can use to better understand the severity of pain. Implement pain assessed on pain scale. Number second, determine the pain characteristics. Pain in osteoarthritis that intensify with use. Implementation होगा पर determine the pain characteristics. Number third, reposition as needed. Repositioning and turning can decrease the stimulation of the pain and pressure receptors. Implementation होगा पर patient reposition. Number 4 देखते हैं assess factor that precipitate pain. होगा pain in osteoarthritis may be associated with the specific movement of the affected joint. Implementation होगा elevation or immobilization of the site complete. Number 5th, apply cold and hot pack on the affected area. Use the cold pack for 10 to 15 minutes to reduce swelling and inflammation as well as to reduce pain impulses. Implementation होगा applied cold and hot pack on the affected area. Number 6, elevate the head of the bed if the patient is short of breath. To increase the oxygen level by allowing optimal lung expansion. Implementation होगा elevation given to the head of the bed. Number 7, place the patient on complete bed rest during severe episode of pain. To enable to patient to rest and to provide comfort. Implementation होगा place the patient on complete bed rest during severe episodes of pain. Number 8, perform relaxation techniques such as deep breathing exercises, guided imagery, and provision of the distractions such as TV and radio. Raise होगा to divert the patient attention. Implementation होगा perform relaxation technique. Number 9 देखते हैं administer oral and topical pain relief as prescribed. रेस होगा non-steroid anti-inflammatory drugs are recommended for osteoarthritis pain. Implementation होगा यहाँ पर administered prescribed analgesics. After writing these interventions, we write the evaluation steps. तो देखते हैं केयर प्लान नंबर सेकंड का evaluation. तो यहाँ evaluation में लिखना हमको now pain is relieved and patient feel comfort. तो इस तरह से केयर प्लान नंबर सेकंड को कंप्लीट करते हैं. अपन नेक्स्ट देखते हैं नर्सिंग केयर प्लान नंबर थर्ड. नर्सिंग केयर प्लान नंबर थर्ड हो गया पर इम्पेयर्ड फिजिकल मोबिलिटी, जिसमें देखते हैं नर्सिंग असेसमेंट में सब्जेक्टिव डाटा. हियर पेशेंट सेज दैट आई एम हैविंग डिफिकल्टी इन परफॉर्म
एक्टिविटी ऑफ डेली लिविंग। ऑब्जेक्टिव डाटा देखते हैं, असेस द पेशेंट्स एक्टिविटी लेवल, रिलक्टेंस टू मूव, रिफ्यूजल टू ट्रांसफर एंड एम्बुलेट, लिमिटेड रेंज ऑफ मोशन। नर्सिंग डायग्नोसिस देखते हैं, impaired physical mobility related to joint stiffness, secondary to osteoarthritis को होगा। The patient will independently execute physical activity. Intervention देखते हैं, first encourage the patient to participate in activity or daily living within the physical limitations. रेशन होगा, performing activity of daily living, promote general well-being. Implementation होगा पर encourage the patient to participate in activity of daily livings within the physical limitations. Number second देखते हैं, demonstrate the use of assistive devices. रेशन होगा, the correct use of assistive devices can help improve the patient mobility, promote safety and reduce the risk of injury. Implementation होगा पर demonstration is completed about the use of assisted device. Number third देखते हैं, assistant is the patient on how to perform active and passive range of motion exercises. Relation होगा, exercises can help in promoting free joint mobility and circulation. Implementation होगा, assisted and taught the patient on how to perform active and passive range of motion exercises. Number 4, allow the patient to rest in between exercises. Relation होगा, rest period are vital to allow the patient to recover and conserve energy. Implementation होगा, allow the patient to rest in between exercises. Number 5, administer pain medications as prescribed. Relation होगा, pain can be relieved through the administration of analgesics. Implementation लिखना है पर administer pain medications as prescribed. Number 6 देखते हैं, immobilize and elevate the affected part. रेशन होगा, immobilization of the affected part with splint can help to reduce pain and muscle spasm. Implementation होगा, immobilization and elevation given to the affected area. Number 7 intervention होगा पर review proper body mechanics with the patient or way in order to increase the patient's participation in activities. Rational होगा, knowledge of proper body mechanics will decrease the risk of further injury, muscle strain or pain on the affected area. Implementation होगा, body mechanics reviewed. Number 8 देखते हैं, refer the patient to physical therapist. Rational होगा, a physical therapist can help formulate an exercise program addressing the immobility and joint dysfunction of the patient. Implementation होगा, refer to physical therapist. After writing these interventions, we write the evaluation steps for this care plan. तो यहाँ पर केयर प्लान नंबर 3 का evaluation होगा. Now patient execute physical activity well than before. तो इस तरह से यहाँ पर हम नर्सिंग केयर प्लान 3 को कंप्लीट करते हैं. नेक्स्ट देखते हैं नर्सिंग केयर प्लान नंबर 4. केयर प्लान नंबर 4 हो गया यहाँ पर एक्टिविटी इंटॉलरेंस. तो देखते हैं इसमें नर्सिंग असेसमेंट में subjective data, patient says that I am feeling fatigue while doing activities. Objective data में limitations of movement. After writing these data we write the nursing diagnosis. तो यहाँ पर 4th केयर प्लान का नर्सिंग डायग्नोसिस है, एक्टिविटी इंटॉलरेंस रिलेटेड टू डिक्रीज जॉइंट मूवमेंट गोल होगा. टू रिड्यूस एक्टिविटी इंटॉलरेंस इंटरवेंशन देखते हैं, फर्स्ट असेस द लेवल ऑफ फिजिकल एक्टिविटी एंड मोबिलिटी ऑफ द पेशेंट. रेशन होगा, दिस विल सर्व एज बेसलाइन डाटा फॉर इंटरवेंशन. इम्प्लीमेंटेशन होगा, असेस द level of physical activity and mobility of the patient. Number 2, monitor the patient's nutritional status. Nutritional requirement must be met in order to efficiently perform physical activities. Implementation होगा, monitor the patient's nutritional status. Number 3, evaluate if the client need to use ambulation aids such as cane or walker for activities of daily living. Relation होगा, the use of assistive device can aid in the improvement of the patient's mobility by overcoming his or her physical activity limitations. Implementation होगा पर evaluation completed about the client's need. Number 4, identify other factors that may contribute to the patient's activity intolerance. Relation होगा, to alleviate the patient's pain and discomfort. Implementation होगा, identified other factors that may contribute the patient's activity intolerance. Number 5, measure and assess the patient's vital sign before and during physical activity. Rational का assessment of the vital sign at rest, provide baseline information in case of too much exertion during the performance of physical activities.
एग्जाम्पल एक्सरसाइज इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर मेजर्ड एंड असेस द पेशेंट्स वाइटल साइन बिफोर ड्यूरिंग फिजिकल एक्टिविटी. नंबर 6 अलाउ रेस्ट पीरियड इन बिटवीन फिजिकल एक्टिविटीज. रेशन होगा दिस रेस्ट पीरियड will allow the patient to restore his or her baseline energy. Implementation will allowed rest period in the between physical activities. After writing these interventions we write here the evaluation steps. तो देखते हैं यहाँ पर सेकंड नंबर केयर प्लान फोर्थ का एवोल्यूशन. तो यहाँ एवोल्यूशन में हमको लिखना है नाउ पेशेंट डूइंग पर्पसफुल एक्टिविटी वेल देन बिफोर. तो इस तरह से हम केयर प्लान नंबर फोर्थ को कंप्लीट करते हैं. नेक्स्ट देखते हैं नर्सिंग केयर प्लान नंबर फिफ्थ. और फिफ्थ हो गया यहाँ पर डेफिशिएंट नॉलेज. इसमें देखते हैं नर्सिंग असेसमेंट. Subjective data patient says please tell me about the arthritis. Objective data होगा assess the patient's existing knowledge about the disease, looking anxious and restlessness. Nursing diagnosis होगा पर knowledge deficit related to misinformation. गोल होगा to improve level of knowledge. Nursing intervention देखते हैं first assess the level of knowledge. Rational होगा help in the intervention process. Implementation होगा assess the level of knowledge, help in the intervention process. Number second reinforce patient education through frequent repetition and follow-up session. Rational होगा frequent and regular education session promote medication and self-care management, adherence with the improved outcomes. Implementation होगा पर patient reinforce. Number third educate the patient about proper medication use. Rational होगा non-steroid anti-inflammatory drugs are commonly prescribed in the treatment regimen of the osteoarthritis but can have a side effect if taken incorrectly. Implementation होगा education given about medication. Number fourth encourage the use of device. Rational होगा the nurse can educate the patient on device, make everyday activities easier. Implementation होगा education given about devices. Number fifth teach the patient about osteoarthritis and its management process. Rational होगा to improve knowledge about osteoarthritis. Implementation of taught patient about osteoarthritis. After writing these interventions we write here the evaluation steps. तो देखते हैं केयर प्लान नंबर फिफ्थ का एवेल्यूशन. तो ये एवेल्यूशन हमको लिखना है नॉलेज लेवल इम्प्रूव्ड. तो इस तरह से केयर प्लान नंबर फिफ्थ को यहाँ पर कंप्लीट करते हैं. तो फ्रेंड्स ये था आज का हमारा वीडियो. आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा. तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल आनंद नर्सिंग फाइल प्रिपरेशन फॉर द नर्सिंग कंपटीशन एग्जामिनेशन. जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है मेरा यूट्यूब चैनल तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा. थैंक यू.